guys, this is ANANT from ANANT Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of AAKASH BANSAL classes and Career Point. And today we are going to study about the complex number, the definition of complex number. In the previous video, I have discussed about the concept of iota. What is iota? So now we will understand the concept of complex number. So what is the, in previous classes, like in class 8, 6, 7, we have studied about the even number, odd number, whole number, natural number, co-prime number, prime number, and similarly like that we studied in class 11th about the complex number. So complex number, what is it? An expression in the form of a plus iota b, where a comma b belongs to real number and iota is equals to -1, root under -1. If you are not understanding the concept of iota, then you must see the previous video. So see, an expression in the form of a plus iota b, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल z. ये z से डिनोट किया जाता है. Z is equals to a plus iota b. This is the representation of complex number. So a plus iota b, here a represent the real part of a number. A represents real part of a number and iota b is the imaginary part of the number. Iota b is an imaginary part. तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे रियल, यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब आर ई इसको डिनोट करते हैं. अगर कोई बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वी से आर ई के अंदर ब्रैकेट के अंदर जेड, तो आर ई जेड इज इक्वल्स टू ए. ए क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट है, एंड यहाँ पे लिख दिए हैं रियल पार्ट, एंड आई एम ब्रैकेट के अंदर जेड इज इक्वल्स टू बी, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, बी है. तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है. तो हम लोगों ने समझा कि ये आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या. ये एक फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी, जिससे कि आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे. तो अब देखते हैं इसके आगे के बारे में. ऑल रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले समझते हैं, जैसे z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 आयोटा, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. यहाँ क्या बोला, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल बता दिए, z इज इक्वल्स टू 7 प्लस आयोटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा 3 आयोटा 3. तो यहाँ पर ये जो 7 है वो रियल पार्ट है एंड द 3 हेयर इज द इमेजिनरी पार्ट. नाउ द कमिंग फर्दर, ऑल रियल नंबर इज एन complex number and all imaginary number is a complex number. Means that if we write here z is equals to 7, this is a complex number. As you can see, we can also write as 0 iota. So all real number is a complex number. मतलब कि जैसे हम z इज इक्वल्स टू 7 लिखे, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा, एज 0 इंटू आयोटा बिकम 0 एंड 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब अगर हम अकेला 7 भी लिखे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ. नाउ कमिंग फर्दर, ऑल इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. हर एक इमेजिनरी नंबर, जैसे एक इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जैसे एक इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा. अब ये जो z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा लिखे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहाँ पर समझते हैं z इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा. यहाँ पे 0 का कोई, ये 0 रिप्रेजेंट द रियल पार्ट एंड 2 रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पर जो 0 है वो क्या हुआ, ये है इमेजिनरी. ये 0 प्लस 2 आयोटा, ये इसको भी हम लोग अगर 2 आयोटा अकेला लिखा हुआ उसको भी हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं. If for a complex number z is equals to 7, यहाँ पर एक, यहाँ पे लेके चले z is equals to 7, समझते, z is equals to 7, b is equals to 0. यहाँ पर क्या है, b is equals to 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आयोटा. यही एक ही बात हुआ, z is equals to 7. इसको मैं से, तो यहाँ पर b का वैल्यू, यहाँ पर जो b है आयोटा के बगल में जो 0 है लिखा हुआ वो b है. यहाँ पर b is equals to 0, then that complex number is called purely real complex number. मतलब अगर
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका आयोटा के पास जो लिखा हुआ नंबर रहता है दैट इज बी, अगर वो जीरो हो जाए मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ऐसा भी। अब आगे यहाँ पर है z इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ a इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर है, यहाँ पर बात एक ही है, 7 प्लस 0 आयोटा वो एक ही बात हुआ। अब यहाँ पर जब a का वैल्यू 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू लिखे 0 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो 0 है। तो इसको नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स, इसका ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी, और अगर उसमें बस रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे z इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स इट इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक बता दिए टेबल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, एक एग्जांपल। So now I am discussing the problem related to purely imaginary and purely real number. So the question is 3 plus 2 iota sine theta by 1 minus 2 iota sine theta will be purely imaginary. ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, उसमें उसको अगर हम ऐसे कहें रियल पार्ट दैट इज ए विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब रियल पार्ट क्या है उसमें 0 है, इमेजिनरी मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा बट द इन दैट the real part is 0, then find the value of sine square theta. So in this situation 3 plus 2 iota sine theta by 1 minus 2 iota, at first we have to rationalize the denominator. In class 8, 9 or 10 we have studied about the rationalizing of denominator. तो अगर इसका हम रेशनलाइज करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हम लोग आगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें भी ये बात डिस्कस करेंगे। जब भी डिविजिबल फॉर्म में दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले रेशनलाइज करके आगे फर्दर सॉल्व किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है क्वेश्चन को। 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इनटू, रेशनलाइजिंग में क्या है, एक पार्ट एक ये पार्ट, इसको प्लस करके इसको 1 प्लस 2 आयोटा साइन ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि डेनोमिनेटर हमारा छोटा आ जाए, एज it becomes in the form of a minus b and a plus b, a minus b into a plus b, that is equals to a minus b into a plus b is equals to a square minus b square. So further 3 plus at first we will multiply this 3 by 1 and after that we will multiply it by 2 iota sin theta as we know. Now plus we multiply 2 iota sin theta by 1 and further we will multiply 2 iota sin theta by 2 iota sin theta. 3 into 1 3 and 3 into 2 iota sin theta becomes 6 iota sin theta plus 2 iota sin theta into 1 2 iota sin theta and 2 iota sin theta into 2 iota, it becomes 4, and iota into iota, in already iota into iota that is equals to iota square, it becomes the value of iota square is minus 1, so it becomes minus, so we have apply the sign minus here, and sin theta into sin theta becomes sin square theta, and in denominator there will be a square and minus b square, so minus b square, iota square becomes minus 1, so minus minus becomes plus, the iota 1 square plus 4 sin square theta. After that here it says, the question says that the it is purely imaginary, means the real part is z, so 3 the real part is 3 minus 4 sin square theta, this is the real part, as the another part contains iota, means that it is a imaginary number, so 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta is equals to 0. So 3 minus 4 sin square theta is equals to, ये ऊपर जाएगा इक्वल्स टू के आगे, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, so 3 minus 4 sin square theta is equals to 0, therefore 3 is equals to 4 sin square theta, 3 is equals to 4, therefore sin square theta, the value of sin square theta becomes
3/4. This is the answer of this question. Now in the next section of the complex number, we will study the Argand diagram. In this xy plane, the real part of the complex number is represented along the x-axis. Here, like this is a complex number, z is equals to x plus iota y. The real part of complex number, that is x, is represented along the y-axis, x-axis, and the imaginary part of the complex number is represented along y-axis. Now if we take an example, the example is 7 plus 3 iota. Here 7 represent the 7 is represented in the x-axis, and this 3 is represented along the y-axis. Here I have written the horizontal axis is real axis and the vertical axis is imaginary axis. If a complex number lies only on the real axis, if a complex number lies only on the real axis, यहाँ पर कहीं पर भी lie कर रहा है, then that complex number will be called as the real complex number, as I already discussed in the previous section. If a complex number lies on the imaginary axis, then that complex number will be called as purely imaginary complex number. If a complex number will lie along the y-axis, only on the y-axis, like the point is here something, then that complex number will be called as purely imaginary complex number. Now coming further, we will discuss about the modulus of a complex number. The modulus of a complex number represent the distance from origin, that is 0, 0. Like a line here is, this is the origin 0, 0, and this is the p, that is x, y coordinate. If z is equals to x plus iota y, then its modulus is represented by OP. This is the modulus of the complex number. ये क्या है, जैसे डिस्टेंस निकालना होता है हम लोग को प्लेन पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सिमिलरली इन दिस वे, in the case of complex number, if z is equals to x plus iota, the modulus is represented by OP, and modulus z is equals to x square under root x square plus y square, where x represent the real part of the complex number and the y represent the imaginary part of the complex number, as I have written here. So now in the next section of the complex number, we will discuss the algebraic operation on the complex number. The first operation on the complex number is the addition of complex number. First is addition of complex number. So if we want to add two complex number, let the first complex number is z1, which is equals to a plus iota b, and the another complex number is z2, which is equals to c plus iota d. This is the two complex number. So if you want to add these two complex number, z1 plus z2, at first we will add the real part of the complex number, that is a plus c, and after that we will write here plus iota, and in the bracket we will add the imaginary part of the complex number, that is b plus d. This is an example. If we want to add 2 plus iota 3 plus 4 plus iota 3, at first we will add the real part of the complex number, that is 2 plus 4, and after that we will add the imaginary part of the complex number, that is 3 plus 3, 6 into iota. So here 6 represent the real part of the complex number, and this 6 represent, that is after iota, this 6 represent the imaginary part of the complex number. Second is the subtraction of complex number. This is the two complex number, and if we want to subtract this two complex number, at first we will subtract the real part of the complex number, that is a minus c. This is the real part, a minus c, then plus we will subtract the imaginary part of the complex number, that is p minus d, and into iota. So there is a similar one example here is 4 plus iota 2 minus 3 plus iota 1, and so 4 minus 3 is 1 plus 2 minus. Now the third operation is multiplication of complex number. If you want to multiply the two complex number a plus iota b,
into c plus iota d. In this case, here I have described how the multiplication of complex number is done. So at first we will multiply a with c plus iota d, a plus a with c plus iota d. After that we will plus iota b, we will multiply iota b with c plus iota d. After that we will multiply a into c ac plus iota ad plus iota bc minus, here iota into iota becomes, my iota into iota is iota square, and iota square is equals to minus 1, so that's why the minus sign comes here. I have written the minus sign into bd. So we will arrange it in the real part and the imaginary part. So AC minus BD, this is the real part, plus AD plus BC into iota. So this is the imaginary part and this is the real part. So this I have written same this in AC minus BD plus AD plus BC into iota. I have written one example also, 2 plus 3 iota into 4 plus 9 iota, and I have proceeded, and the answer will be minus 19 plus 42 iota. After that, the fourth operation is the division of complex number. In dividing the complex number, if the complex number is written in the fraction, at the first work for us is to do the rationalization of the denominator. If we rationalize the denominator, say, like a plus iota b by c plus iota d, if we rationalize, so we will multiply this complex number a plus iota b by c plus iota d into c minus iota d by c minus d iota. I have well explained here how this formula comes. So at first a plus iota b into a plus iota b and c minus iota d is multiplied, and the result is this. So a into c, after that a into minus ad, that becomes minus ad plus iota b into c, that is plus iota bc. After that iota b into minus iota d, iota into iota becomes iota square is minus, so minus becomes plus, that's why here I have written plus bd, and in the denominator it is simple, c a square minus b square, that is c square minus t square, c square minus d square, so it becomes iota square is minus and minus becomes plus, that's why I have written c square plus t square. And after that I have arranged the whole complex number in the real part and the complex real part and the imaginary part. AC plus BD, this is the real part, and BC minus AD into iota, this is the real part, and this is how the formula have came. Now the next property is the equality of complex number. If the first complex number is equals to the second complex number, means that it shows that the real part of the complex, these two complex number is equal, and the imaginary part of the two complexes is like in here a plus iota b is equals to c plus iota d. So a is equals to c and the imaginary part, that is b, is equals to d. So these are the 5 properties of the complex number. So this is all about today, and in the next lecture we will discuss the numericals based on these 5 properties, these 5 algebraic operation on the complex number and about the modulus of the complex number. Thank you, and click on the subscribe button and click on the bell icon for the latest update for the complete series of the complex number.